Yes, yes, okay. We'll go. ఆయన మాట్లాడతాడు, తర్వాత నేను రిమార్క్ చేస్తాను. Right, sir. This conference will now be recorded. మొత్తం Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, an extended day for Dr. TSPR channels. A wonderful day today being World Rivers Day, and what a better way to connect with our culture, which is agriculture, and people who fight for that. We need to invite them. We have seen farmers still holding their reign in and around Delhi for such a long time, in spite of COVID, in spite of Corona. They have been fighting, they have laid a siege, stating that those three black laws should be taken back. There is no question of allowing corporates to ruin our culture, to dictate terms to what should we eat and what we should not eat, like what they have done in America and Europe. They have made humans look like a vegetable. God has given us this wonderful structure. This structure can revive on its own. This is what we have been shouting from rooftop on this channel, with evidences, with constitution going, invoking evidential act. And as per rule of law, this body is so natural. And this natural immunity, Sahaj Rog Nirodhak Shakti, happens with only nature guided food. That means this agriculture should not be poisoned, come whatever may. No one should dictate, no one should destroy the Mother Earth. When such is the case, even when after Corona taught us that bitter lessons, why the hell we are trying to still meddle with our food habits and the people, the farmers, Annadatas, who are giving this staple food, without which we cannot survive. So, what is this all about? We have Mr. Akshay Kumar, who will be on a Padayatra from Champara, an historical place. Why it's so historical, he will describe it. From Champara to Banaras, in the name of Lokniti Satyagraha Padayatra. And he is none other than the convener of Navnirman Kisan Sangathan, and he is from Orissa. Odisha, we are claiming that ours is the first state to give Raitu Bandhu, but much before that, Kerala, Orissa has already started that. But from a state like Orissa, if you have someone leading from the front in the form of a Padayatra, why? In whose support? What is its ultimate goal? For that reason, we have this live show on, and we are again eternally very thankful to Narsimha, Dr. Narasimha Reddy Donti Reddy, who has been part of my evolution of this channel right through. He is a public policy expert. As and when you need, he is always there on board to sensitize people with clear evidences on the issues, so that this issue, once it becomes popular, it will be turned into a policy. So that is the beauty of this channel, and the guests who adorn this channel, highlighting the issues. We are not sensationalizing. Welcome to this special show, Mr. Akshay Kumar ji. First, आपसे बात सुनने के बाद I will just share some videos for the public to understand. I want you to speak first. What is this yatra all about? What is the historical importance of your select place, Champara? Yes, sir. Akshay Kumar ji, Can I start? please. Okay. Thanks to that Honorable Senior Journalist Dr. Shiva Prasad Reddy, host of this program, Dr. Narasimha Reddy and friends. You see that we are going to start this Padayatra because you know that since last 9 months,
farmers are likes of farmers are sitting in Delhi, and near about more than 650 farmers gave their life for the same thing, for the same cause. Because that central government passed 3 laws, which is not only black laws, but anti-social, anti-national laws. Not only for the farmers, but I'm telling you anti-national laws, because this is killing the nation also. Killing the integrity of the nation, killing the very basic norms of the nation is destroyed by these 3 laws. And when that lakhs of farmers joined and sitting in Delhi, and 650 farmers died there, gave their life to the same cause, still then, Prime Minister hasn't come to visit them, hasn't come to meet them. Whenever is going to host the flag hosting is going to be in Lal Killa. So the thing is that we stayed there near about 2 months. We stayed there. You know that Navanirbhan Kisan Sangathan, it is one of the very popular and mass-based organizations in Odisha. There are 6 lakh memberships there, farmers membership. And whenever we are not the political parties, but being the non-political party, we are challenging the government. You know that Kalia Yojana, which has been passed in 2019, and it had come that only by the effort of this movement in 2018 that 1 lakh farmers have garnered the Bhubaneswar city of Bhubaneswar in Odisha, and government of Odisha became in which way it was done, that it became bound to that sanction that 11,000 crores of rupees and for the Kalia Yojana. So this organization is fighting in Odisha on the basic 3 concepts: price, prestige, and pension. On the base of price, we tell that you see that anything is going to be produced by the industrialist, by the company, that its name concept is given that that MRP, maximum retail price. But whatever that the farmers are producing the things, it has been decided the concept is MSP, minimum support price. So the thing is that we decided, you see that even you see that in 1972, the price of gold, it was 240 rupees. Whenever that the price of wheat and that is paddy, it is near about 80 rupees. Means 3 quintal wheat and paddy they will sell that 10 grams of gold they can purchase. But if you see at the same time, in 1972, the price of, you see that the salary of a peon, he was drawing that 18,000 rupees, 18 rupees. Now he is drawing 18,000 rupees, 1,000 times. It is increased. Similarly, one primary school teacher was drawing 40 rupees. It has increased up to 40,000, 1,000 times. Similarly, officers, all these things. And if you see gold, it has increased 200 times. But the price of the wheat, price of the all this agricultural price, it has increased up to what? Up to 18 to 20 times. So what he decided, the justified price, it is not a minimum support price, but a minimum justified price that farmers should get. Similarly, we have taken that pension, the social security allowance should be given to the farmer, because according to the Article 21, everybody is secured except farmers. For everybody, from peon to prime minister, social security allowance is secured. It has been fixed for everyone. One peon, he can draw that 18,000 rupees. One primary school teacher, he can draw 40,000 rupees. One soldier, he can draw that 60,000 rupees. And if after that 18 years or 30 years of their salary, giving the job Service. Change, but if their time is going to come to an end, then what will that? They will get the pension. But whenever you see that farmers, there is no security, nothing is there. So we demanded that some security allowance that should be given, because Article 21 is telling the right to life and right to livelihood. Anybody is giving the service to the society, service to the nation. The welfare government must secure its right to life and right to livelihood. It must be secured by the national welfare government. But for everybody, it is secured, but except farmers. That's why we told that minimum 5,000 rupees should be given to the farmers at the age of 10, 20. Whenever one is taking the pen, that he is secured, he is getting the salary, he is getting the pension. But for the farmers, it is not there. So taking this price, prestige, and pension. Prestige, you tell, if you take, farmer is the main owner. He has 3 key wants: key of bread,
key of vote, key of note, money, because all the taxes, you will see most of the taxes go from the hands of the farmers. 80% farmers are there, and most of the tax collected from the farmers only. And with that taxes, that all these government employees to ministers, everybody, they take the salary for this, taking this money. So the thing is that we are fighting this movement last 10 years. At the same time, MS Swaminathan, with a scientist, major scientist, and he gave the Swaminathan report came that why that all these farmers are exploited, because they are not getting the justified price. So he gave the concept that you give the right justified price to them. So that is MS Swaminathan gave No, this. but let us not talk What happened about, is because less we talk about MS Swaminathan, it is better, because he is the one who has ruined in the name of green revolution. coming. He has chemically Yeah, just destroyed coming, our just- agriculture. Yes, I'll play these videos, then you can start, because these videos are also important. You want to make some point? Please go ahead. Correct. Please. Just two points. Yeah. So I give the background, but the thing is that when that farmers gave their sacrifice their life in Delhi border, we stayed there 2 months, and one yatra we had taken by buses, being Jharkhand, Bihar, and Uttar Pradesh. When we went through Uttar Pradesh, being Banaras and Lucknow, government of Uttar Pradesh, they couldn't give the entry into Banaras and Lucknow, because they thought that, you see, if this yatra will come, this will create the vibration in UP. So the thing is that we had gone in 15 January, we had gone to Delhi. After that, coming back, then we decided that we'll start this yatra, Padayatra, that in about 4,000 to 5,000 farmers will start Padayatra from Champaran to Banaras. Yeah, you stay there. I'll Champaran just is come the back to you, sir, basic because place. I'll come back to you. What is the importance of Champara? Okay. I'll come back to you. I only hope you have such 6 lakh farmers in your group. No one is watching it. That is how they try to create problems for us. But anyhow, I hope this link is widely circulated, so that at least now I'll just try to present these videos, the importance of this your yatra. 1 second. Yeah. Just share the screen. Share. Hope you are able to watch the screen, Mr. Akshay Kumar and Narasimha Reddy garu. Are you watching the screen, sir? Yes, we can. Yes, yes. Right. We can see. भारत में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तब भी किसानों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। अंग्रेज किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे और अपनी मर्जी की फसलें तक उगाने को मजबूर करते थे। जैसे अंग्रेजों को नील की खेती करवाने में बहुत फायदा होता था, इसीलिए वो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाया करते थे। नील उगने से अंग्रेज तो मालामाल हो जाते थे, लेकिन किसान बर्बाद हो रहे थे, क्योंकि एक बात तो ये कि अंग्रेज उत्पादित नील के बदले बहुत मामूली से पैसे दे रहे थे, और या फिर कुछ भी नहीं। और दूसरी बात ये कि लगातार नील की खेती करने से ज़मीन बंजर हो रही थी, जिससे किसान उस ज़मीन पर और कोई दूसरी खेती भी नहीं कर पा रहे थे। इन वजहों से किसान परेशान होकर अंग्रेजी सरकार के विरोध में आ गए थे, और फिर जिसके परिणाम स्वरूप सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। आज के भारत की परिस्थिति देखी जाए तो वो अंग्रेजों के समय से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। देश की वर्तमान सरकार ने 3 कृषि बिल पास किए हैं, जिनके अंतर्गत अब से प्राइवेट कंपनियां या कोई व्यक्ति किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करवा सकते हैं। मंडियों के साथ साथ वो भी किसानों से उनकी उपज खरीद सकते हैं और उस उपज को कितना भी स्टोर कर सकते हैं। किसान पिछले 10 महीनों से इन 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। दरअसल अगर आप ध्यान से इन कानूनों को देखेंगे तो अंग्रेजों की नील की खेती करवाने में और इन 3 कानूनों में से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में ज्यादा अंतर नहीं है। उस समय अंग्रेज किसानों को नील उगाने के लिए बोलते थे, लेकिन जब किसान मेहनत करके नील उगा लेता था तो बहुत कम दामों में नील खरीदने की बात करते थे, जिससे किसान परेशान हो गया था। आज के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून के अंतर्गत भी कोई भी व्यापारी किसान से किसी फसल को उगाने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ किसान को डर ये है कि अगर व्यापारी ने खरीदने से ही मना कर दिया
या मनचाहे दाम पर खरीदने की बात करने लगा तो किसान के पास कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह भी कहा जा सकता है कि नील की खेती करवाने का अंग्रेजी सरकार का फैसला देश की पहली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। उस किसान आंदोलन को मजबूत और संगठित करने का काम महात्मा गांधी जी का था, जिन्होंने 1917 में चंपारण पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व किया। यह भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह था। गांधी ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध व्यवस्थित और अहिंसक आंदोलनों की एक झड़ी सी लगा दी। ब्रिटिश सरकार गांधी के इस अहिंसक सत्याग्रह से दुविधा में पड़ गई और अंत में उसे झुकना पड़ा। 1918 में बिहार उड़ीसा सरकार ने चंपारण कृषि कानून पास किया, जिसमें गांधी द्वारा बताई गई सारी बातें शामिल की गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि अंग्रेजों को जनता की आवाज के आगे झुकना पड़ा हो। लेकिन अगर आप आज की देश की सरकार की ओर देखें तो वो बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। विडंबना तो इस बात की है कि आज से लगभग 104 साल पहले 1917 में एक व्यक्ति ने गुजरात से चंपारण आकर किसानों के हक के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था, और आज उसी गुजरात की भूमि से आकर नरेंद्र मोदी किसानों की गुहार सुनने तक को तैयार नहीं है। लेकिन देश के लोगों ने अभी तक हार नहीं मानी है। भारत के किसान लगातार 10 महीनों से सत्याग्रह कर रहे हैं, और उसी श्रृंखला में उड़ीसा के बड़े किसान नेता अक्षय कुमार जी ने उसी चंपारण की भूमि से एक यात्रा निकालने का निर्णय किया है, जिस चंपारण में गांधी ने अंग्रेजी सरकार को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरुद्ध चुनौती दी थी। ये यात्रा 2 अक्टूबर को चंपारण से शुरू होकर 19 अक्टूबर को बनारस पहुंचेगी। वो ही बनारस जहां से नरेंद्र मोदी संसद में जाने के लिए चुनाव में खड़े होते हैं। ये यात्रा लाखों भारतवासियों को जोड़ते हुए बनारस पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से 10 सवाल करेगी और उन्हें यह याद दिलाएगी कि लोकतंत्र लोकनीति से चलता है, ना कि सिर्फ राज्य की नीति से। इसीलिए इस यात्रा का नाम लोकनीति पद यात्रा है। भारत की आम जनता के अपने प्रधानमंत्री से ये सवाल हैं कि लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक निर्णय क्यों? 500 से ज्यादा मौतों के बाद भी किसानों से मिलने के लिए आपकी संवेदना क्यों नहीं जगी? दूसरा सवाल, तीनों काले कानून कब वापस होंगे? तीसरा सवाल, एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं? चौथा सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार पर फैसला कब? पांचवा सवाल, भारतीय परिवारों को महंगाई से राहत क्यों नहीं? छठा सवाल, कोरोना से दिखाई दिए विफल स्वास्थ्य सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी? सातवां सवाल, पढ़ाई, दवाई, कमाई, महंगाई, उचित मूल्य जैसे जरूरी सवाल सत्ता में आने के इतने साल बाद भी आपके एजेंडे में क्यों नहीं? आठवां सवाल, मजदूरों के पलायन और बढ़ती अमीरी गरीबी असमानता का जिम्मेदार कौन? नौवां सवाल, कॉर्पोरेट और विदेशी कंपनियों के हाथ की कठपुतली सरकार कब तक बनी रहेगी? 10वां और आखिरी सवाल, प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध लूट की छूट कब तक? इस सत्याग्रह में ज्यादा से ज्यादा योगदान देकर इसे सफल कराइए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सबको ये वीडियो भेजकर यात्रा में जुड़ने के लिए प्रेरित करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। So this is one video which I thought I'll share, and I think there is another one. Is it the same? नमस्कार साथियों, आपने देखा है कि पिछले 1 साल में कोरोना और लॉकडाउन के समय सरकार की लापरवाही, दवाई की अनुपलब्धता और प्रायोगिक चिकित्सा ने लाखों जिंदगियां हमसे छीन ली हैं। पूरा सरकारी तंत्र नकारा साबित हुआ है। तीनों काले कानून के विरोध में और एमएसपी के गारंटी के कानून के लिए देश भर के किसान पिछले 8 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के सामूहिक नेतृत्व में आंदोलित हैं। लेकिन सरकार है कि उसके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। महंगाई पर तो सरकार ने लोगों की मेहनत से की गई कमाई को लूटने का मानो पूरा इंतजाम कर रखा है। पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी मानो कम थे कि अब दैनिक जीवन भी आसमान छूती महंगाई से त्रस्त है। गैस के दाम, बिजली बिल, डीजल और पेट्रोल के साथ साथ दैनिक उपभोग की चीजों में टैक्स की इतनी वृद्धि कर दी गई है कि अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है।
साथियों, गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के चंपारण सत्याग्रह के 104 साल बीत जाने के बाद भी भारत के किसानों को खेती किसानी के सवाल पर आंदोलन करना पड़ रहा है। तब और अब में फर्क सिर्फ इतना आया है कि तब अंग्रेज शासन कर रहे थे और अब भारतीय। उस समय नील की खेती और उसके दाम को ब्रिटिश कंपनियां नियंत्रित कर रही थी। अब दोबारा से खेती को कंपनियों को देने की साजिश है। ऐसे दौर में हम सब लोगों का कर्तव्य है कि किसान के इस जीवन मरण प्रश्न को देश भर में और नीचे तक जोर शोर से अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से ले जाया जाए। जन जागरण के लिए सत्याग्रह के तौर पर हम साथियों ने उसी चंपारण से पदयात्रा करने का निर्णय किया है जहां गांधी जी ने किसानों के लिए 1917 में सत्याग्रह किया था। ये यात्रा किसानों के साथ साथ समाज के उन तबकों को भी जोड़ेगी जो व्यवस्था में असहाय होकर पड़े हैं। हमारी यात्रा खेती किसानी के साथ साथ आम आदमी के स्वास्थ्य यानी दवाई, छात्रों के भविष्य यानी पढ़ाई, नौजवानों के रोजगार यानी कमाई और परिवारों के खर्चे यानी महंगाई को मुख्य मुद्दा बनाएगी। किसान नेता अक्षय कुमार के नेतृत्व में नवनिर्माण किसान संगठन ने निर्णय लिया है कि हम देश के लोगों को जगाने और एकजुट जनमत के सवाल को प्रधानमंत्री जी से पूछने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र बनारस तक चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा लेकर जाएंगे। यह पदयात्रा देश के सवालों के जवाब के लिए गांधी के बताए रास्ते लोक नीति सत्याग्रह के माध्यम से चंपारण से प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक 324 किलोमीटर की दूरी पदयात्रा के माध्यम से जन जागरण करते हुए पूरा करेगी। यात्रा गांधी और शास्त्री जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर से शुरू करके लगभग 18 दिनों में बनारस 19 अक्टूबर को पहुंचेगी। इस यात्रा का नेतृत्व अक्षय भाई कर रहे हैं। अक्षय कुमार, जो कि उड़ीसा के किसान नेता हैं, 20 साल की उम्र में ही देश की समस्याओं को समझने के लिए घर से निकल गए और आजीवन ब्रह्मचारी रहकर देश की सेवा करने का प्रण लिया। गांधी विनोबा की कर्मभूमि वर्धा में रहकर गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह का अध्ययन किया और ये बातें सिर्फ अपने कथनों में ही नहीं रखी बल्कि अपने जीवन में भी उतार दी। इसी अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर आज अक्षय भाई उड़ीसा के अंदर लाखों किसानों को इकट्ठा करने में कामयाब हो पाए हैं। साल 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया। इस साइक्लोन से प्रभावित लोगों की राहत सामग्री के अंदर भी भ्रष्टाचार हो रहा था। इस भ्रष्टाचार के मामले में अक्षय कुमार जी ने नवनिर्माण समिति बनाकर वहां के भ्रष्ट अफसर, नेता और एनजीओ के गठजोड़ का खुलासा किया और कुछ ही दिनों में 30,000 लोगों का आंदोलन भी खड़ा कर दिया। 2001 में गांधी, जयप्रकाश और लोहिया की विचारधारा पर बने राष्ट्रीय संगठन युवा भारत के राष्ट्रीय संयोजक भी रहे, जिसके अंदर उन्होंने युवाओं को राष्ट्र के कार्य के लिए प्रेरित किया। उड़ीसा एक संसाधन संपन्न राज्य है। ऐसे में ही दक्षिण कोरिया की एक पॉस्को नाम की कंपनी उड़ीसा में लोहे का खनन करने के लिए आना चाह रही थी और साल 2005 में एग्रीमेंट भी हो गया। इसके खिलाफ अक्षय भाई ने एक जोरदार आंदोलन छेड़ दिया, जिससे सरकार को झुकना पड़ा और पॉस्को अपने पैर वहां नहीं जमा पाई। 2008 और 9 में उड़ीसा के कंधमाल जिले में 2 समुदायों के बीच दंगे हो गए, जिसको शांत कराने के लिए टीचर्स एसोसिएशन को साथ लेकर अक्षय कुमार जी ने राज्य सरकार की अनुमति से शांति प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाई। उनकी इस एकता की स्थापना की भावना के लिए राज्य प्रशासन ने कई बार अक्षय कुमार जी की प्रशंसा और सम्मान किया है। अक्षय कुमार जी 2010 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में शुरू हुए भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य के रूप में जुड़े और आंदोलन से बनी पार्टी में ना जाकर 2010 से लेकर अब तक अन्ना हजारे जी के दिल्ली और राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आंदोलन हुए उन सभी आंदोलनों में अक्षय भाई ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। अक्षय कुमार जी ने 5 नवंबर 2018 को 1 लाख लोगों को जोड़कर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की तरफ 80 किलोमीटर लंबी पदयात्रा तय की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा की सरकार को जनता के दबाव में 11,000 करोड़ की कालिया योजना लागू करनी पड़ी। अक्षय कुमार जी भारत और भारतीयता के आधार पर खड़े राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक हैं। इस बात का पता आप उनके द्वारा किए गए 1 दिन से लेकर 3 दिन, 7 दिन और 23 दिन तक बिना कुछ खाए उपवास पर रहकर किए गए अनशन को देखकर लगा सकते हैं। अक्षय कुमार जी वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन के संयुक्त किसान मोर्चा की समिति के सदस्य भी हैं और सरकार के साथ 3 और 5 दिसंबर 2020 को हुई 2 वार्ताओं में शामिल भी रहे हैं। आइए अब इस यात्रा के बारे में बात करते हैं।
इस यात्रा में प्रधानमंत्री से हमारे 10 सवाल हैं। सबसे पहला, लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक So let me, already we have, this is the Yatra detail, 2nd October, and it will finish on 20th October with a public meeting, and then I'm just giving you some visuals of how Mr. Akshay Kumar was leading his agitation before starting this great movement in support of farmers, not only for support of farmers, everyone as consumer. When farmer is not benefited eternally, likewise the end consumer like us, even we are not benefited. Farmer is not getting the price for his produce, nor we are going to get the cost of, that's what we have been showing, pulses, rice, all essential commodities, oils, they have doubled up since corona. And who is benefited? Because of lockdowns, we lost everything. Still, we are paying double the price. Neither farmer is happy nor consumer is happy. Then who is happy then? For whose sake these prices are being raised? That is $1 million question. Yes, Akshay Kumarji, I think for people it has been very clear. Yep. Please go ahead, sir. You see that this Padayatra we are going to start on 2nd October. That in video it is very clear that we are taking that on the concept of what Gandhi had started and raised the voice against contract farming. And the same contract farming is going to be implemented all over India, all over the country. So this is very unfortunate because in this way, if you see the acts, only the corporate sector like Ambani, Adani, all these corporate sector will be benefited in the name of farmers. No farmers will be benefited. But in which way act has been passed, it has been shown that it is for the welfare of the farmers, empowerment of the farmers, but really it is the empowerment of the corporate sector, Ambani and Adani, and all this corporate sector will be benefited. So that's why we have taken this Yatra just where we will raise this voice and this question we want to raise, all these 10 questions. That and central point is the agriculture. Because central point is the agriculture and in the periphery all these problems are there. So unless until these agricultural problems are solved and these farmers are not given the priority and this act which has been passed, if that act had been passed and we are telling that MSP guarantees act that should be passed, but government is not agree because on 3rd December and 5th December I was with the talk with the government, but government was not agreed and all these people they are telling that you see that can't be done. Only that some correction can be done. I told that one correction we want that Piyush Goyal is there, a railway minister in that discussion he was there. I told them Piyush that everybody has been privatized. You will see that from education, health, everything, even defense, ISRO, all things have been privatized. Mines, but only agriculture was there. But in the corona period, that has been privatized. So one correction to do that corporate sector shouldn't take entry into this agriculture sector because agriculture it is that for the self-sustenance, that it is the self-dependence because on the base of self-dependence that all these farmers they are standing on their own feet. But what you are telling, you are bringing that this act because they will be dependent. They will be dependent and in the sphere of this market that they will be nowhere. Only that corporate sector will occupy everything. So this Padayatra we are taking with these questions and near about 2,000 farmers they are coming from Odisha to join and in UP, Bihar, all these places, even South, Kerala, Tamil Nadu, all these friends will come to join and around 4,000 to 5,000 farmers will go to Banaras. Banaras, why? Because this is the constituency of Prime Minister. In the representative democracy, that Prime Minister is the chief symbol of representative democracy. So we want to raise these questions with the people. We are going to raise these questions and we think that this will bring the impact and that awareness, it will be developed and people will be organized. And Lok Niti Satyagraha, what is the people's policy? And with the people's power, they will prove and they will control this politics, control this
crazy this tantra, and people will be where that in the constitution it is given we the people of India, we the people, they are important. And when that we have been deducted from the tantra, only tantra is there, but lok is not there, people are not there. So here we are going to prove it. You see that when people will be united, when Gandhi had gone to suffer, what is told? Gandhi told that in his that he has written in the biography, I saw God face to face. Because in one night, thousands of farmers came to meet Gandhi, and British government couldn't do and withdraw this 144 there. So this is the historical moment, and with the people's power it has been done. So it has been proved there that when Gandhi told in his biography, when he wrote that I saw a God face to face. So this is the thing. We think that in that historical context, that yatra going to be started, and it must bring the impact, and it will bring that pressure on the government that to accept this norms, accept this policy of the that people's movement that Sanyukta Kisan Morcha is continuing in Delhi, that they will be bound, government will be bound to listen, otherwise it will lose. Yeah, two straight questions to you before I go to Mr. Dontireddy Narasimha Reddy. Government says because of this move, now farmers are happy, they can sell this produce anywhere. They have created e-platform. Now they are going to get a good rate if they are selling it in Champara, if they are getting 10 rupees. If they sell it in Banaras, they are going to get 100 rupees. How do you look at this scenario? And not only that, You see, yeah, please go ahead. you see, Reddy, in the past instance, people see that even the questions there. In the past instance, the past place, what will they do? That instead of 10 rupees, suppose that MSP we are getting that 868 rupees, 940 rupees, they will tell that we will give that 2.5. And advance also will give 500 rupees. But next year, within 2 years, what will happen? You will see that even the government school, the government closed the government schools, because the government told that you see that the children are not coming to the government school, they are going to private schools. And when it is closed, so the importance of the private schools, that demand, after that demand, that they increase the price, and that the monopoly started. Similarly, these company will come or started the monopoly after that. And when even when British government had come, that they gave the tea, they produced the tea, and without price they gave the tea that to drink. But after that, you see that how that exploitation continued. Similarly, when that they will tell when that monopoly will be started, and this MSP, this system will, government system will not be there, then what will happen? They will tell you see from Australia we are getting the wheat that near about 1,000 rupees. If you will give us that 900 rupees, you will take, otherwise you will not take. What will happen? This monopoly will come into their hands, and whatever the policy they will give, that will accept at the farmers where there is no other alternative for them. So what will happen? Because after 3 years, 4 years, 5 years, you will see that when they will be lost, farmers will lose. What will happen? They will give their lands to the company, because they will tell that you when loan that done, suppose 1,000 rupees, farmers will do the loan at 10,000 rupees, and that will bring from the same companies, and they would have given the lease for 3 years. Then farmers will write that we can give the lease for 30 years because we have taken these loans, we can repay you, and this lease we can give you for the long-term years. So to the British government also, that 99 years lease had been given. Now all these small farmers, first they will give all these lands to those companies in the long-term basis lease they will give, and after that the big farmers they will also take to give. What will happen? All these lands owners, those who are the farmers, they are the owners. They will be Mazdoor, and those companies they will take the lands. They will be the owners of this land. So this is the thing. This is the phenomena. When government is telling that it has not been written that lands will not be given to the lands will be given to the companies, will not be sold to the companies. It will not be sold, but in the long-term basis, lease can be given. Similarly, you will see that when the lease will be given, they will tell you first will give that 2.5. Whatever the MSP are getting, will give more than that. But after that, what will they do? They will do that. You see, whatever the seeds we are telling that you will put in your lands. That fertilizer we are telling that you have to put in your lands. So what will happen with everything? Land,
farmer seed, fertilizer, everything system will be in their hands. All this mechanism will be in their hands. Only that farmers will be Mazdur, company will be owners. So this is the phenomena going to happen. Secondly, for the consumer, I'm telling, when that 1956 Act was there, that all these essential commodities, there is the limit, up to which limit that you can stock. But now, what has happened after that, removing that, changing that 1956 Act, now that Ambani, Adani, that they can purchase and can stock as much as that they want. There is no limit. So what will happen? The market will be in their hands. When farmers will produce the potato rate will be 2 rupees. But when potato will be taken by the companies, no potato will be there with the farmers, and farmer will go to purchase the potato from the market for their daughter's marriage. At that time, potato rate will be 100 rupees. That means it is not the farmers but the consumers. All. So in this process, whole market and the mechanism is going to in the hands of the companies, and farmers and all these consumers are going to be the companies they will play taking these farmers, and farmers has no role in their self-sustenance agriculture. Wonderfully said. Yes, Dontireddy Narsimareddy garu, how do you look at this scenario now? Narsimareddy ji. Yeah, I thought you had another question for him. I have another question, but I thought that you will be better off to answer that as a public policy expert. I thought of putting it to him, but now I think you should be able to answer it much better than Akshay Kumar ji also. I think he got three of them in one. The MSP, there is no guarantee as government claims. And what happens? Neither farmer is gaining nor the consumer. Hoarders, that's what we discussed last time, difference also. What is storage? Storage is godams of government, FCI. See, in Corona times we have seen, as and when we needed, it was distributed to public distribution system. But hoarding, as I rightly said, they will purchase for 2 rupees from farmer. If the same farmer wants to buy for his marriage, wedding necessity of his daughter, it will be sold at 100 rupees per kg, because they are storing it. I mean, they are hoarding it, not storing it. So government has no control. So that Essential Commodities Act, more and more things are moving out. Yes, how do you look at this scenario from public policy expert point of view and in the common man's interest? First of all, I think we should congratulate Akshay Kumar ji for taking up this Yes. Padayatra Noble cause, from yes. Champaran to Varanasi, because this is a very important route, and this brings back the memories of British rule. Yeah. And also it reminds us of the current rule, which is almost similar to British rule. I think that's a comparison he has been trying to make, and that's happening. It's not even a prospective situation. It is already happening, and in fact, farmers sitting in Delhi for the past 300 days, they are protesting on the basis of experience. It's not just analysis. It's the experience of farmers with regard to the implementation of 3 laws and government policies which favor markets, which favor multinational companies, and which are favoring global food supply chain systems. I think this we need to understand very clearly. Now, coming to Essential Commodities Act, which was raised very appropriately by Akshay Kumar ji. If you look at the current situation in Sri Lanka, there is a lot of chaos with regard to food availability. Leave Sri Lanka, you think it's a developing country, but even in UK, London, supermarkets are finding a problem to procure food and water. And even in US, you can see the similar situation. So the point which is coming from this disruption of food supply chains is
we need Essential Commodities Act, which regulates food storage. In fact, I think next month we are again having a meeting at WTO on public procurement systems. Last time we had a meeting in Bali, Indonesia. There, Indian government almost compromised our position, and now this is a next level of conference which is happening. Now the point is, developed countries are pressurizing India basically to avoid public procurement and to avoid a public storage system. So they think this is against their markets. This is against their market, profit. So government of India enacted these three laws basically due to pressure from those quarters. So that is where the protest is coming. It is not about how to benefit the farmers, but it is about how to benefit the multinational corporations and food supply chains, because they think this is how the market should be. So it is a perspective of the multinational institutions and companies that has reflected in these three black laws which we are talking about. So now we are seeing in the last 1 year again rise in consumer prices. So this is a immediate result of the lifting of Essential Commodities Act, and because of that, storage, procurement, private procurement has increased, public procurement is decreased, and in the last 1 year we can see Food Corporation of India has brought a series of new circulars where they are reducing on public procurement, especially decentralized procurement by the states. So I think eventually, even though government and negotiations with the farmers association has been saying we will not implement, and but still they are not removing the laws at all, even though the demand from the farmers association is there. So the now without removing it, even though Supreme Court said it is they are in limbo, that means they will not be implemented. But in actual practice, they are being implemented. But they are implemented in the same way what the apprehensions have been raised. They are implemented with regard to public procurement. So public procurement is decreasing, and they are implemented in the way where farmers are going to lose, because in the last two crop seasons, three crop seasons, in fact, now we are coming up with another season, we are seeing farmers did not get price anywhere. You look at onion farmers in Maharashtra, Madhya Pradesh, and even Andhra Pradesh, they are not getting prices. And we are seeing tomato prices falling even to 1 rupee per kilo, or less than 1 rupee, even 50 paise in some places. So we are seeing prices going down for groundnut, prices going down for wheat, prices going down for corn, and even rice, paddy, which is still the only in paddy and wheat government is still procuring, though the percentage is decreasing every year. Even in these two crops where procurement is happening, farmers are not getting the price. And in Telangana, we have seen, it said, the government said we have procured 100% crop harvest, paddy crop harvest. But farmers, they got exploited at various stages of this procurement. So right from marketplaces where the middlemen, and then the rice millers. So for per quintal, they have lost 10 to 15 kgs
in the name of quality, weight, and all those, many other reasons. 15 cages were removed, and only they got a price for 85 cages. And that too, the price was just about procurement, MSP or below MSP. And of course, they had to pay for other services like transport and Hamali charges. And many farmers did not get the cash on time. Even though the law says they should be paid, in time. Yeah. Even now, 6 months after the procurement, many farmers are get the price. So you can see the implementation happening in one way, and other way where government says we have enacted these laws to benefit the farmers. Those provisions are not getting implemented. So we can see this dichotomy. And if you ask any official, they say, "Oh, where are the laws? They are not implemented." So you can see this ambiguity, abstractness, which is continuing. Yeah. And the Prime Minister is oblivious of all this. When he went to UK, United States yesterday, uh, where is this demand that Indian agriculture should be sovereign? I think he talked about many other things, but in the hallowed, those United Nations General Assembly, he should have mentioned India had a tradition of a sovereign agriculture. So Indian farmers, they produce their seeds, they save their seeds, they exchange their seeds, and they breed their own seeds, so, and then produce good quality, nutritious food. And they used to do that. So this is the glory which should have been talked about in UN General Assembly. But unfortunately, he did not refer to this at all. But he talked about something else. We are doing this, that. But today, in the year 2021, 2020, we are seeing extreme climate events hitting frequently all over the world and in each of the states of India. So climate change is again and again reminding us of the need to produce food in Indian way. Indian agriculture, the culture we are talking about, was a more sustainable method of production. And the government has been chiseling away at this agriculture for the past 30, 40 years. And this recent loss in the last decade, I don't blame only this party. Even the earlier parties which are in power in the government, central government, and also in the states even now, they don't have a stand, they don't have a position, they don't have a perspective. I think this is where this Padayatra of Champaran to Banaras, I think this is reminding us we need this perspective. We need an Indian perspective. We need an Indian agriculture methodology. We don't require global food supply chains. In fact, recently, UN Food System Yes. Summit was held, full of multinational corporations, and they are talking of about smart nutrition, genetic modification, gene editing, and a lot more myriad things under new vision of agriculture. And they That's say the ridiculous. great reset. So the World Economic Forum is saying the great reset. So they want to change, and ironically, they want to talk it a revolution, even though these are all pro-market advocates. They want to talk in the terminology of revolution. We have seen But Swaminathan's revolution Green for what? Revolution. We have seen Swaminathan's Green Revolution, how he destroyed. Now they want to, these people, they want to even do better than what Swaminathan has done, destroying everything, soil fertility, water retention capacity, the environment, farmers' health, consumers' health, It has, what not, polluting everything. Yes, sir. it has become much bigger,
So now we have bigger players coming in, and they want to market, corner profits. In fact, they want to hold control on our basic seeds, on nature, on food production. Through that, I think they'll control the population. So that is where again Akshay Kumarji's, Padayatra, comes, reminds us of the importance, because we are losing our freedom without realizing that we are losing it. I think that's Wonderful. a clear message which is coming from this Padayatra, and I hope many youngsters will join him, because this is a very great, reset. What Right. we'll use the same word. This reset is being started at Champaran. So I hope many more young Indians will join it, and they'll take it upon themselves, because we need to be sovereign, not because of inherent emotion, but we need to be sovereign for sustainability, for the welfare of people, Indian people, for women, for rural economy, and consumers, farmers, and all other kinds of sociological groups which are, diverse, and they are living at a very eco-friendly level. I think all of us, they need this kind of perspective, and I think we need to bring back those perspectives, Yeah. and remind our politicians, especially before elections, because Uttar Pradesh is going to elections. So let them realize it. We have seen near Banaras, Moradabad, and many other places, handloom weavers suffering, because the same arguments were used in textile sector. So agriculture sector, as he mentioned, it has come at the last, but I think the fight is continuing from the farmers, and I think we all need to support that agitation. Wonderful. Thank I you. think we need to support Mr. Akshay Kumar's noble Padayatra Lokniti Satyagraha, which is going to start on October 2nd, the birth anniversary of the greats Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri, because he is the one who has coined the term Jai Kisan. Don't forget, Jai Jawan and Jai Kisan. But Jai Jawan, it's fine. They have been fighting for us. But what about Jai Kisan, who have been feeding, because of which we are surviving? Mr. Akshay Kumarji, a passing comment before I play your first video again, those 10 demands for your Padayatra. What is that you would like to say to the people? Once, two or sentences in Hindi too, because there is a demand for people asking you to speak in Hindi too. देखिए जी कि मेरा जो मानना है जी कि ये जो पदयात्रा है, ये पदयात्रा ऐसा एक सत्याग्रह है जो जिसको हमने लोकनीति सत्याग्रह दिए हैं, किसान जनजागरण पदयात्रा, मगर इसको हमने सत्याग्रह का नाम दिए है लोकनीति सत्याग्रह। Sir, I think थोड़ा ऑडियो आपका ऑडियो, there is some disturbance in your audio. लोग जागरूक हो जाता है। Yeah. और जो झूठ का जो ये चल रहा है, पूरा जो वातावरण चल रहा है, झूठ को लेकर जैसे आगे सरकार जा रहा है, वो पर्दाफाश हो जाता है उसका। इसलिए पहला बात है उस झूठ का पर्दाफाश करना, सच्चाई को लोगों का सामने लाना। अगर सच्चाई लोगों का सामने आ जाता है और सच्चाई आने का बाद लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, संगठित हो जाता है सच्चाई को लेकर, तभी सही में एक नई युग का आगे नई युग आगे बढ़ता है। इसलिए हम मानते हैं ये जो पदयात्रा, आपका आवाज बीच बीच में टूट जा रहा है अक्षय कुमार जी। हमने शुरू किया सत्याग्रह शुरू कर, साथ ही उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो कानून को लेकर और ये जो प्रकार का जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर को, जो जिस कॉर्पोरेट सेक्टर का विरोध में हमारा आजादी के लिए जिन्होंने लड़े, भगत सिंह से लेकर गांधी से लेकर नेताजी सुभाष बोस से लेकर, जिन लोग ने आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे, जिनका जो स्वप्न था वो स्वप्न आज खत्म होने जा रहा है। वो आज देश इतना खतरा में जा रहा है जिसमें पूरा वो स्वप्न ही खत्म होने जा रहा है, उनका जो आदर्श था। इसलिए उस स्वप्नों को बचाने के लिए
और सही लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान का मूल्यों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आज हमको एक होकर खड़ा होना पड़ेगा। किसान बचेगा तो देश बचेगा, और किसान नहीं बचेगा तो देश ही खत्म हो जाएगा। इसलिए किसान बचाओ, खेती बचाओ, देश बचाओ। और ये जो चीज है वो दूसरा आजादी का लड़ाई है, और उस दूसरी आजादी का लड़ाई में नौजवान से लेकर, छात्रों से लेकर, किसान से लेकर हर आदमी खड़ा होने का जरूरत है। क्योंकि इंग्रेज आने का पहले एग्रीकल्चर सेंटर में था, खेती सेंटर में था, इंडस्ट्री परिधि में था, मगर ब्रिटिश आने का बाद इंडस्ट्री को सेंटर में ले गए, एग्रीकल्चर को परिधि में ले गए। इसलिए सवाल ये है कि आज जो स्थिति पैदा हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर परिधि में चला गया है, इंडस्ट्री सेंटर में आ गया है। इसलिए सवाल ये है, आज जो लड़ाई चल रहा है, एग्रीकल्चर को सेंटर में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए कैसे व्यवस्था बना पाएंगे, वो स्वावलंबी स्वाभिमानी व्यवस्था को कैसे बनाकर रख पाएंगे, वो परावलंबी व्यवस्था को कैसे हम हटा पाएंगे, जिसको कॉर्पोरेट सेक्टर अपने हाथ में लेना चाह रहा है। अगर ये कर पाएंगे तभी उन दिन, जिस दिन लड़ाई लड़े थे भगत सिंह, नेताजी सुभाष बोस गांधी से लेकर बाबा अम्बेडकर से लेकर, जो लड़ाई लड़े थे, उस लड़ाई का स्वप्न हम साकार कर पाएंगे। इस चीज को लेकर ये पदयात्रा 2 अक्टूबर को शुरू होगा, 20 अक्टूबर को बनारस पहुंचेगा। और मेरा पूरा आग्रह है या निवेदन है, सारे साथी नौजवान से लेकर किसान से लेकर इसमें शामिल हो। और संयुक्त किसान मोर्चा का जो मूवमेंट चल रहा है, जिसमें नवनिर्माण किसान संगठन एक पार्ट है, हम चाहते हैं उस आंदोलन को अगर हम सत्य और अहिंसा का रास्ता पर आगे बढ़ा पाएंगे, तब ये देश को बचा पाएंगे, हमको खुद को बचा पाएंगे और देश को बचा पाएंगे, और आजादी का सपनों का जो शहीद का जो सपना है उसको साकार कर पाएंगे। धन्यवाद। पक्का। अब मैं आपको ये लास्ट 10 चीज़, आप ये 10 मुद्दे क्या है, मैं और एक बार वीडियो प्ले करता हूँ, तब तक आप बने रहिए। और साथ में आप सभी लोगों की एक विनती है कि ये डॉक्टर TSPR चैनल, सिटीजन्स डॉक्टर TSPR चैनल, एनवायरनमेंट डॉक्टर TSPR चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब कुछ शेयर करिए। ये लिंक जो भी है यही लिंक रहेगा, हम एडिट नहीं करेंगे इसको, फिर पुनः प्रसार हम और एक डेट दे के भी नया लिंक के साथ भी करेंगे, लेकिन ये लिंक बना रहेगा। तो इसीलिए आप ये लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को पहुंचाने की थोड़ा आप भी कष्ट कीजिए अक्षय कुमार जी, और साथ में जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, ये लिंक को आप कोने कोने में पूरे देश में आप पहुंचाइए, ताकि ये सत्याग्रह जो अक्टूबर 2 से जो चलाया जा रहा है, इसका मूल सिद्धांत क्या है, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ आपको। भारत में जब अंग्रेजी हुकूमत थी, तब भी किसानों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। अंग्रेज किसानों से मनमाना लगान वसूलते थे और अपनी मर्जी की फसलें तक उगाने को मजबूर करते थे। जैसे अंग्रेजों को नील की खेती करवाने में बहुत फायदा होता था, इसीलिए वो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाया करते थे। नील उगने से अंग्रेज तो मालामाल हो जाते थे, लेकिन किसान बर्बाद हो रहे थे। क्योंकि एक बात तो ये कि अंग्रेज उत्पादित नील के बदले बहुत मामूली से पैसे दे रहे थे, और या फिर कुछ भी नहीं। और दूसरी बात ये कि लगातार नील की खेती करने से ज़मीन बंजर हो रही थी, जिससे किसान उस ज़मीन पर और कोई दूसरी खेती भी नहीं कर पा रहे थे। इन वजहों से किसान परेशान होकर अंग्रेजी सरकार के विरोध में आ गए थे, और फिर जिसके परिणाम स्वरूप सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। आज के भारत की परिस्थिति देखी जाए तो वो अंग्रेजों के समय से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। देश की वर्तमान सरकार ने 3 कृषि बिल पास किए हैं, जिनके अंतर्गत अब से प्राइवेट कंपनियां या कोई व्यक्ति किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करवा सकते हैं। मंडियों के साथ साथ वो भी किसानों से उनकी उपज खरीद सकते हैं और उस उपज को कितना भी स्टोर कर सकते हैं। किसान पिछले 10 महीनों से इन 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। दरअसल अगर आप ध्यान से इन कानूनों को देखेंगे तो अंग्रेजों की नील की खेती करवाने में और इन 3 कानूनों में से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में ज्यादा अंतर नहीं है। उस समय अंग्रेज किसानों को नील उगाने के लिए बोलते थे,
लेकिन जब किसान मेहनत करके नील उगा लेता था तो बहुत कम दामों में नील खरीदने की बात करते थे, जिससे किसान परेशान हो गया था। आज के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून के अंतर्गत भी कोई भी व्यापारी किसान से किसी फसल को उगाने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ किसान को डर ये है कि अगर व्यापारी ने खरीदने से ही मना कर दिया या मनचाहे दाम पर खरीदने की बात करने लगा तो किसान के पास कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह भी कहा जा सकता है कि नील की खेती करवाने का अंग्रेजी सरकार का फैसला देश की पहली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। उस किसान आंदोलन को मजबूत और संगठित करने का काम महात्मा गांधी जी का था, जिन्होंने 1917 में चंपारण पहुंचकर आंदोलन का नेतृत्व किया। यह भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह था। गांधी ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध व्यवस्थित और अहिंसक आंदोलनों की एक झड़ी सी लगा दी। ब्रिटिश सरकार गांधी के इस अहिंसक सत्याग्रह से दुविधा में पड़ गई और अंत में उसे झुकना पड़ा। 1918 में बिहार उड़ीसा सरकार ने चंपारण कृषि कानून पास किया, जिसमें गांधी द्वारा बताई गई सारी बातें शामिल की गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि अंग्रेजों को जनता की आवाज के आगे झुकना पड़ा हो। लेकिन अगर आप आज की देश की सरकार की ओर देखें तो वो बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। विडंबना तो इस बात की है कि आज से लगभग 104 साल पहले 1917 में एक व्यक्ति ने गुजरात से चंपारण आकर किसानों के हक के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था, और आज उसी गुजरात की भूमि से आकर नरेंद्र मोदी किसानों की गुहार सुनने तक को तैयार नहीं है। लेकिन देश के लोगों ने अभी तक हार नहीं मानी है। भारत के किसान लगातार 10 महीनों से सत्याग्रह कर रहे हैं, और उसी श्रृंखला में उड़ीसा के बड़े किसान नेता अक्षय कुमार जी ने उसी चंपारण की भूमि से एक यात्रा निकालने का निर्णय किया है, जिस चंपारण में गांधी ने अंग्रेजी सरकार को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरुद्ध चुनौती दी थी। ये यात्रा 2 अक्टूबर को चंपारण से शुरू होकर 19 अक्टूबर को बनारस पहुंचेगी। वो ही बनारस जहां से नरेंद्र मोदी संसद में जाने के लिए चुनाव में खड़े होते हैं। ये यात्रा लाखों भारतवासियों को जोड़ते हुए बनारस पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी से 10 सवाल करेगी और उन्हें यह याद दिलाएगी कि लोकतंत्र लोक नीति से चलता है, ना कि सिर्फ राज्य की नीति से। इसीलिए इस यात्रा का नाम लोक नीति पद यात्रा है। भारत की आम जनता के अपने प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक निर्णय क्यों? 500 से ज्यादा मौतों के बाद भी किसानों से मिलने के लिए आपकी संवेदना क्यों नहीं जगी? दूसरा सवाल, तीनों काले कानून कब वापस होंगे? तीसरा सवाल, एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं? चौथा सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार पर फैसला कब? पांचवा सवाल, भारतीय परिवारों को महंगाई से राहत क्यों नहीं? छठा सवाल, कोरोना से दिखाई दिए विफल स्वास्थ्य सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी? सातवां सवाल, पढ़ाई, दवाई, कमाई, महंगाई, उचित मूल्य जैसे जरूरी सवाल सत्ता में आने के इतने साल बाद भी आपके एजेंडे में क्यों नहीं? आठवां सवाल, मजदूरों के पलायन और बढ़ती अमीरी गरीबी असमानता का जिम्मेदार कौन? नौवां सवाल, कॉर्पोरेट और विदेशी कंपनियों के हाथ की कठपुतली सरकार कब तक बनी रहेगी? 10वां और आखिरी सवाल, प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध लूट की छूट कब तक? इस सत्याग्रह में ज्यादा से ज्यादा योगदान देकर इसे सफल कराइए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सबको ये वीडियो भेजकर यात्रा में जुड़। यस सर, वंस अगेन विशिंग यू ऑल गुड लक। आपको शुभकामनाएं हमारे आपके यात्रा के साथ। हम सब के लिए आप जो कर रहे हैं शुभ शुभ हो, और आप स्वास्थ्य बनाए रखिए। और एक एटलीस्ट आई होप विद दिस यात्रा द गवर्नमेंट विल एटलीस्ट इनवाइट farmers to speak on those 3 laws, how they are going to influence our day-to-day life and our eating habits, how it will destroy our environment. Because even we have discussed in 2013 when they took away potato and onion from Essential Commodities Act, how onion prices went up. They lost the governments, both central and state government. If I remember, Delhi government also lost because of onion prices. Now if you remove all these essential commodities, what common man eats, what should he eat?
Already people are dying because of starvation. We have been challenging out of 27,000 deaths in a day in India. How many are dying because of starvation, corona and other diseases? Till now it is not clear. Yes sir, take care. So once again I request you to Thanks. share the link across, support Dr. TSPR channels, and I wish you good luck. We will keep coming to you very regularly. Wherever you are, even in your course of yatra, we will do these live shows. And I only hope people will support because it is in the larger public interest. Thank you, sir. Take care. Bye. Thanks. Thanks. Bye. Sir. Thank you. Thanks.